उनका भी उद्घाटन हो सकता है। तो इन भवनों को जैसा बनाया जा रहा है, तो सब भवन जब बनेंगे उसके अंदर मुख्य रूप से 4 भवन ऐसे हैं जिनके जो मंत्रालय हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अभी 1, 2, 3 इसके अंदर करेंगे। कुछ मंत्रालय इनके अतिरिक्त बिल्डिंग्स में भी जाएंगे, जिसके अंदर शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन। इन 4 भवनों में जो मंत्रालय हैं वो सब ये 3 भवन प्लस अन्य कुछ बिल्डिंग जो पहले से तैयार हैं उसके अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि उन स्थानों पर भी जो बचे हुए कर्तव्य भवन हैं 4 से लेकर के 10 तक, उनका निर्माण शुरू कराया जा सके। तो इस नाते से आज ये इस भवन के बारे में जिसमें बैठे हैं, इसका कल का जो उद्घाटन होगा उसकी सूचना देने के लिए मैंने आपको बुलाया है। कल सायंकाल 6 बजे प्रधानमंत्री जी स्वयं कर्तव्य पथ पर ही एक सभा को संबोधित करेंगे उद्घाटन के बाद, और उसमें सभी सरकारी कर्मचारी तो होंगे ही, क्योंकि बहुत से भवन जो स्वयं स्थानांतरित होने वाले हैं वहां के सब लोग होंगे और कुछ पब्लिक के भी लोग होंगे। तो सायंकाल 6 बजे वो कार्यक्रम होगा। जो भवन अब नया बना है इसमें बहुत सी चीजें एक प्रकार की नई अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएंगी। बहुत से रिफॉर्म्स इसके अंदर लाए गए हैं, क्योंकि जब नए भवन बन रहे हैं तो जो कठिनाइयां पहले आती थी उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया में ये सारे भवन बने हैं, तो इसमें एक प्रकार से आने जाने का लोगों की जो सुविधा होगी, ईज ऑफ जैसे लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे ईज ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक को भी इसमें सुविधा हो, सब लोग नजदीक आ सकें और उसकी मूवमेंट जो है उसका टाइम घट सके, एफिशिएंसी ज्यादा आए। और डिजिटल इंडिया के नाते से भी जितनी आवश्यकताएं आज किसी कार्यालय को चलाने की होती है, खास करके जैसे अब पहले फिजिकल फाइल्स को इधर से उधर मूवमेंट होता था, अब ई ऑफिस बन रहे हैं। सभी ई ऑफिस का एक नेटवर्क, वो चूंकि सभी विभागों का एक सिस्टम बनता है, तो उसका एक मोर एफिशिएंट तरीके से उस डिजिटल सिस्टम को बनाया जाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा होगा और उसको मैनेज करने के लिए मोर प्रॉपरली इसको मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आज के इस डिजिटल सिस्टम को मैनेज करने के लिए विशेष तौर पर जहां तक सिक्योरिटी का विषय है, साइबर सिक्योरिटी भी अपने बहुत बड़ा विषय होता है, तो उस सिक्योरिटी के नाते से भी पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी हो और ऐसे सब काम किए जाएंगे। कल का जो उद्घाटन, ये जो कर्तव्य भवन नंबर 3 है, इसमें जो एरिया है आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर 2 बेसमेंट हैं और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड प्लस और प्लस 6 स्टोरीज, यानी ऐसे मिलाकर के सब मिलाए हम 2, 2, 4 और 6, 10, तो 10 तल हो जाते हैं। बेसमेंट पार्किंग के काम आएगी, जिसके अंदर 600 गाड़ियां, पजल पार्किंग जिसको कहते हैं, उस हिसाब से उनका स्थान होगा। और ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आगमन और उसके बाद रिसेप्शन, और बाद में कुछ विभाग अलग अलग जो रहेंगे, कुछ विभाग और कुछ स्टोरेज की व्यवस्था आदि जो आवश्यक होती है वो ग्राउंड प्लस पर भी रहेगी। फिर तल नंबर 1 से लेकर के तल नंबर 6 तक विभिन्न मंत्रालय जो आने वाले हैं वो सब आएंगे। अभी इस भवन में जो मंत्रालय आने वाले हैं, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, एमएसएमई, डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर, इनका भी अपना एक कार्यालय होगा। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का और ये है, और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा, और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। जैसे इसका भवन का नंबर है कर्तव्य भवन नंबर 3, तो एक भवन के नाम से इस कमरे का नाम नंबर बताते ही ये पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को कहाँ जाना है, कहाँ संपर्क करना है। इस प्रकार से उसकी सारी की रचना की गई है। और मैं समझता हूं कि एक मोटी मोटी जानकारी आपको ये बताई है। एक प्रेजेंटेशन हमारे सेक्रेटरी साहब श्रीनिवासन जी करेंगे, उसमें कुछ टेक्निकल चीजों की जानकारी भी है, और उसके बाद फिर आपसे प्रश्नों की जो भी कोई जानकारी आप लेना चाहेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। वो प्रेजेंटेशन उस तरफ। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन पीछे है, तो आप क्या कैमरा बंद हो इस तरफ कर लेंगे या थोड़ा बीच में खाली कर देंगे? इसको कवर करेंगे, क्योंकि
अच्छा, तो आप इस एक आमने सामने देख लेंगे. यू आर एबल टू सी इट, सो डू वी प्रोसीड? ये सामने से हट जाओ. बस आप इस तरफ से हट जाइए ताकि, हाँ ऐसे ही वहां उधर से भी थोड़ा उधर से भी थोड़ा जगह कर दीजिए. Can we start? Thank you, friends. Warm welcome to all of you to this curtain raiser. माननीय मंत्री जी, मनोहर लाल जी और आप सभी के उपस्थिति में आज मैं कर्तव्य भवन 3 का जो कर्टन रेजर होने जा रही है, इसके बारे में मैं एक प्रस्तुतिकरण करना चाहूंगा. इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम सेट करें, so this entire central secretariat complex is being built around the Kartavya Path, along the Kartavya Path, and it brings in efficiency, coherence, and integration of government infrastructure, so that it is a framework which is a shared framework which will support collaboration, formal hierarchies, and the evolving patterns of governance. Now, this is a very important context because what we are seeking to achieve and what we are going to witness from tomorrow onwards is this important change and adaptation that is happening in the administrative framework and the governance architecture of the Central Secretariat. Next, please. Friends, as we are aware, we have been working out of buildings that are very old. Infrastructure was also aging. As Honorable Minister mentioned, many of our older buildings date back to around 50s. Some of the main secretariat, old secretariat buildings such as the North Block and South Block go back nearly a century. The construction began in 1917, completed in 1931. So the infrastructure is very aging. Even buildings such as Shastri Bhavan, Krishi Bhavan, Udyog Bhavan were built around 60s. So now they are well past their life period. So the government offices, the staff were functioning in suboptimal conditions. The cost of maintaining these buildings and the operational cost was also very high. The space constraints were very high, including, if some of you were witness, there was a time when I used to work in the DOPT and it used to rain. The upper floor, sometimes there would be water leaking, and you would have even seen staff sitting with umbrellas open. It used to be as bad as that. Now the entire shift to modern environment, better working conditions is happening. Next, please. As the Minister has mentioned, there is a shift in emphasis in bringing in concepts of democratization, co-ownership, shared vision, and shifting of that emphasis from statehood, that is Rajpath, to Kartavya Path, which is citizenship. How do we as citizens of a proud independent nation contribute to the making of a resolute and a strong India? And this is also the cultural and the civic reorientation that is happening. Along the Kartavya Path, which you would be visualizing even as you walk there, the entire esplanade has been changed. Yet more and more citizens now are able to access. Vast areas of greens have been made open and made available to the public. So this is the entire Kartavya Path project that was inaugurated by the Honorable Prime Minister a couple of years back. Next, please. Friends, this entire shift of emphasis is on bringing about modernization. As we are aware, how well we organize our workspace contributes to how well we can actually work. So the administrative modernization is a part of the larger set of governance reforms. A very important part of it, of course, is the physical infrastructure. The other aspects, such as the soft parts of it, including Mission Karma Yogi and others, are the other dimension. In addition to that, making the workspaces more functionally efficient, more integrated through the digital governance frameworks, e-office and other such digital India initiatives, as Honorable Minister mentioned, is one of the core elements of this particular project. In addition, you'll also find that this project is designed in a manner that the entire infrastructure is owned commonly. It is a co-owned spaces. All the infrastructure is also co-owned, and the maintenance architecture, the maintenance arrangements are also in a way that it is shared.
This not only brings about a reduction in cost, improvement of efficiency, it also brings in a lot of interministerial coordination. And to that extent, this entire building that you have witnessed even as you were coming in is designed around these principles of collaboration and coordination. In addition, it is very designed in a manner to enable easy and seamless access to the people, so that the people who need to come to the Secretariat, stakeholders who need to come and participate in the discussions here, find it not only accessible but also they are able to come in seamlessly. And to that extent, on the Kartavya Path, mass mobility infrastructure is also being constructed, including extension of the Delhi Metro network system. I will explain that as we go forward. In addition, when we talk about accessibility, we also need to be cognizant that there are many important sections of our population that need special support for accessing the physical spaces. All of that has been provided. You'll find even lifts have the braille marking, also auditory signals and so on. Next, please. Friends, this is the entire Central Vista Master Plan. I will spend a minute on it. Kindly have go towards the left side. The green large space to the left is the ridge area. In the front is the Rashtrapati Bhavan, where you find that cross kind of a structure. And as we go down, and we are now going past the Raisina Hill, on both the left side and the right side, you are finding the north block and the south block. As we go down further, we see the Vijay Chowk. To the right, you are able to see a kind of a quadrangle to the right. To the left is a quadrangle which comprises the Parliament complex, the old Parliament and the new Parliament. The new quadrangle on this side is the new executive enclave. You come down the Kartavya Path, the straight narrow esplanade. To the left, you are seeing CCS 4 and 5, which this space is currently occupied by Shastri Bhavan and Krishi Bhavan. These buildings are under, we are tendering, they are under redesign and demolition and reconstruction. The newly constructed buildings are going to be called 4 and 5. Opposite that are the existing Udyog Bhavan and the Nirman Bhavan. These buildings are also undergoing reconstruction in a matter of 2 months. So as we go down further, we are now coming to Janpath, where we are currently, and to the left is the National Archives, again an old Lutyens Baker building. Opposite that is the first of the Central Secretariat buildings. CCS 3, where we are currently seated, is the first of the 3 buildings, 3, 2 and 1. Opposite that is the National Museum. You can see across the greens, and along that you will find another building under construction, which is being constructed on what used to be the earlier Vice President Enclave as well as the Vigyan Bhavan annexing. So this is another building that is already under construction. I think the delivery of this particular building will happen by next year. So this is an equally large building which will accommodate close to around 7,500 staff. Now coming back to the Kartavya Path, the Central Vista, as we walk down further, to the left you will find a small triangle with a small building called CCS 10. As Honorable Minister had mentioned, the buildings are numbered 1 to 10. So it is Kartavya Bhavan 1 to 10. So that is also under construction. This is expected to be ready for use in April of next year. We go slightly ahead. This is the famous C hexagon where the India Gate complex is located. So this entire vista and this architecture is also now connected, and in a very short time we will be seeing that work starting with the extension of the Delhi metro system from the Indraprastha side. So this entire network is going to flow, connect all the Secretariat buildings, connect the North Block and the South Block, which again, as you know, is a very epochal project that is coming up, and finally gets connected, I will show it later, with the Shivaji Stadium, so that this entire mass mobility infrastructure will enable a citizen to come to the Central Secretariat on a metro system or on a bus
so that he or she doesn't need to take any of his own private transportation. Next please. This is a view of the new Central Secretariat complex when we see it from the Vijay Chowk side. To the left you are seeing the Railway Bhavan, to the right closest to us is the Vayu Sena Bhavan. And as we go forward, the buildings that I described earlier, the new building that is coming up on the left side will replace the Krishi Bhavan and the Shastri Bhavan. The building on the right will replace the Udyog Bhavan and the Virvan Bhavan. Going further down to the left, you will find the National Archives and then CCS 3, which is the Kartavya Bhavan 321. Opposite side is the new building that is already under construction, as I mentioned, and a few buildings are currently proposed to be retained as they are, which are the National Museum, the National Archives, the Ministry of External Affairs Jawaharlal Nehru Bhavan, and to the left the Dr. Ambedkar Auditorium. All those buildings are new, they are going to be retained as it is. Going further down, the Vanijya Bhavan, which is also a new building, is going to be retained as it is. So this, in short, is the new Central Secretariat complex called the Kartavya Bhavan complex. So the titles there explain what are under construction, what are at planning and design stage. But I would like to, on behalf of the Honourable Minister, he has been a great source of inspiration, like to assure all of you that this entire complex will be under construction by December 31st. Each and every building will be under construction. And it is we have adopted modern construction technologies. So we are planning that the entire construction time is around 20 to 22 months. So that in the most proximate time, we complete the entire project. Next please. Kartavya Bhavan 3, Honourable Minister has already mentioned, the plinth area is 1,50,000 square meters. Basement is 40,000 square meters. There are two basements with a ground floor, upper ground with the mezzanine, which functions both for accommodating staff as well as records and others, plus 6 floors. You will notice here that the parking is made, arrangements are for 600 cars, dedicated parking. The idea is, to the extent possible, everybody should be able to come seamlessly through the public mass mobility infrastructure. We don't have to bring personal vehicles. One of the big problems that many of you would have experienced, and we all are aware, that even take a place like the Sea Hexagon, we did a traffic study, close to around 80,000 vehicles cross the Sea Hexagon only to go from one point to the other without any necessary connection with activity going on the Kartavya Path. So we are taking measures to redesign this entire transit movement and provide the larger transportation architecture to enable ease of movement, highest facilities, enable staff who are currently also moving to the new GPRA complexes to come to the places of work in the shortest time span. Today on an average, a staff member takes about 50 to 60 minutes, even if he is living in the central zone. And by and large, we find that a lot of staff also uses the metro, which means they are coming from beyond. They will be able to use more and more. So the emphasis is on ensuring more mass mobility, ensuring more the public transportation system, reduction of private vehicles. Therefore, to that extent, we are much more climate compliant. The configuration of the work halls and the cabins are extremely standardized, and as Honourable Minister has said, these current 321 buildings are also designed, they are accommodating currently more spaces and more ministries, because we wanted to find the space to be able to quickly build and then expand. So there will be a reconfiguration of buildings and ministries that will happen after 2 years. But currently all of them have been accommodated in the most comfortable manner. The typology is standard for each level, whether it is a work hall level, the hierarchical level, whether it is a deputy secretary, whether it is a joint secretary, whether it is a secretary. The entire typology is standardized so that everybody gets similarly. And even ministers and yes, sir. MOSs. So it's absolutely standard. There is no variation, so that it becomes fungible. Then the operations become so much more easy in case we have to shift and all. So the idea that government is
is a process where everybody can participate. There is no necessarily some kind of a uniqueness to certain things is also avoided. So this is the, in short, the design philosophy. Next, please. There are a lot of facilities. Now we know that increasingly our workforce is not only young, large. I think the close to around 30-40% of our workforce now consists of ladies, and naturally there is a need for creches. There is a great emphasis on wellness at work. So therefore there are spaces such as a yoga room, a medical room. The kitchen and the multi-purpose hall and the cafeteria are also designed very uniquely. In fact, you would have noticed that most ministries, most offices, everybody tends to take care of their own services and entertainment and refreshment on their own. Now we are replacing that with a commonly provided service providers, so that each department, each ministry does not have to create its own cafeteria, create its own canteen structure, creates its own serving staff, so that not only do they occupy and take up spaces, it becomes very inefficient. So it would be possible for these workspaces to become much more modern in terms of their process. So these are the common facilities. Each building has 24 main conference rooms. This is one such which has a 45 capacity, and I think close to 75-80 of us are sitting with great comfort here. So which means if needed we'll be able to expand that. Adjacent to this corner conference room is a smaller conference room which has a 25 capacity. Most of these have been allotted to each department for their own uses. In the work halls, as you would have walked, you would have noticed, the work hall is a very well modulated, well designed modular structure with a lot of access to air, light, natural light. But in addition, each work hall space also has its own meeting rooms, so that the smaller meeting rooms where the staff can meet, finish their function, and without having to walk too long, less than 10, 15, 20 feet, they'll be able to go back to their tables. So these are 67 meeting rooms. The corners of the building, which is, each of the building is a rectangular building, there are 27 lifts, fast lifts. The whole building is centrally air conditioned, typically maintained at 24 degrees, so that we are maintaining working efficiency. And the escalators also, which are at the ground floor level, enable public access to the public transportation infrastructure. As I was mentioning, the metro system that would come in and the other public access that would come in, including ability to cross the lawns and greens, go on to the other side, would also be available at this level. So you can go down the escalator without having to exit the building, especially on the Kartavya Bhawan side, at the surface level, and access the other side of the Kartavya Bhawan. Next, please. The buildings have been designed to be extremely sustainable with high degree of environmental and safety and security standards. Next, please. This is a Griha 4 rated building. We have tried to ensure, that through the glazing, there's a double glazing, which means the heating would also be reduced. There is thermal insulation, reduction of noise would take place, and there would also be minimized condensation. Inside, the lighting is also energy efficient LED lighting, and the sensors are also deployed so that there is no unnecessary lights that turn on if there is no occupancy. So there are occupancy sensors which turn on and turn off the lights. There are daylight sensors to also ensure that certain lights are shut down automatically. The integrated building management system, we will show you some pictures as we go ahead, enables us to maintain this building, all the other buildings, and eventually the entire Secretariat Kartavya Bhawan precinct from a centralized control system. Some of you might be aware there is an institutional arrangement also. There is an officer who is designated as Chief Executive Officer of the Kartavya Bhawan. He is on the rank of Joint Secretary in the Ministry of Housing. So he collaborates with CPWD, collaborates with the local police, coordinates all of these functions, and ensures that going forward processes will be put in place so that the entire complex and the precinct is run in a very efficient manner. So the IBMS works towards that. In addition, it also enables
optimal utilization of energy so that the energy loads are kept at a minimum. Lifts are also designed with a regenerative drive so that energy recovery takes place on a braking and a deceleration basis. Similarly, we have over-deck insulation using a 80 mm POF so that we reduce the heat loads. Air insulation is there behind the stone cladding to reduce the heat loads again. The air conditioning system is of a variable frequency drive which provides air conditioning depending upon the specific required load. Heat recovery system also enables utilization of waste energy from the exhaust air. Further, it's very important to ensure that the ambient conditions are very healthy. There is a fresh air intake that takes place, so we are constantly monitoring the carbon dioxide levels so that the healthy work environment is also maintained. Basement level ventilation system is also there, which kicks in only when the CO2 levels drops in below the acceptable limits. Next please. Security features are very elaborate because this is one of the most important and most sensitive parts of the government apparatus, and therefore not only CCTV indoor-outdoor controls but ID-based access control systems to ensure both free and smooth movements for officials and visitors. There is an integrated electronic security gadget systems that have been kept, such as DMFP, X-ray baggages, under-vehicle scanning systems, boom barriers, vehicle lockers. You might have seen some of these technologies at work as you came in. In addition, there is a power fence also for perimeter security, and there is this integrated command and control center for the entire Central Vista and the Secretariat complex area, which would enable us to respond to any kind of maintenance to any kind of an emergency requirement. Next please. The safety features also are latest. We have ensured that the latest fire safety measures are introduced. The automatic fire detection and suppression system has been installed, and the interiors are also resistant to fire, including certain doors and gypsum finishes. Next. The renewable energy for these buildings are also designed. Currently, we are looking at rooftop solar regeneration at 366, generating over 5.34 lakhs of units annually. The additional solar capacity potential of the rooftop of security building is about 200 kilowatts. Solar water heating system also meets 26% of our daily hot water requirement. Next please. We have taken measures to ensure that we are utilizing as little extra water as needed. Naturally, with this kind of a human load and a footfall, water consumption will take place. However, this has been designed on a zero discharge basis so that the wastewater is treated and reused multiple times. So a reuse of close to 1.1 million liters per day is treated as wastewater. That is 60% of the total demand is being met by the reused water. Rainwater harvesting of 740 KLD is also being treated and reused for potable purposes. In order that the flushing operations are efficient, we have dual plumbing. Horticulture irrigation is happening with drip technology. Low flow taps, sanitary fixtures, sensor-based urinals, wash basins, and the drinking water fountains, which we find in many of the modern buildings, have also been deployed so that we don't have problem of running taps, and we'll be able to utilize only that amount of water that is needed to be consumed. Next please. Solid waste management system also is in-house, and it is designed in such a manner that all the solid waste gets converted into useful manure. On a daily basis, we expect that this building alone will be processing about 1,000 kilos of organic waste. Next please. Vehicles, as I mentioned, Honorable Minister also mentioned that we have a puzzle parking system in the basement where 324 cars will be located. They've already been assigned by official designation and by the ministry, so that all the vehicles are kept off the main level, and then slowly, of course, that discipline and familiarity with operations has to come in. There's a parking guidance system so that there's a smooth navigation of the vehicles. And in order to support the entire electric mobility architecture, 120 electrical vehicle charging points are also provided, which will charge close to 650 vehicles.
Next, please. This building is also built on the use of sustainable material. Lot of recycled construction and demolition waste has been used here. Lot of lightweight tri-partition walls were used for the partitioning of the interior spaces to save conventional bricks, save topsoil, and also reduce the weight of the building. Low VOC paints and chemicals have been used. The toilets themselves are very interesting. We have brought factory constructed pods. So the entire toilet has been brought in and inserted. The entire unit is an inserted unit, so that it is also first of all factory finished, but it is also smooth in terms of plumbing, and it becomes efficient in its operations. And finally, we have fully modular dry stone cladding, which you see outside, which brings in a distinct outlook and to the external architecture. Next, please. Next, please. This, friends, is the atrium. You would have observed it. It is an atrium that is designed to not only cool the building from inside. A lot of the staff, lot of the ministerial offices would also be getting indirect light from this atrium. It also reduces the entire the cooling requirements of the building, and at the same time enables fresh air to come in. This is again, as some of you would be familiar, this design resembles the Stein design at the India Habitat Center. So it's a very, very beautiful design. It creates a very ambient working conditions and the living condition, and a lot of the cafeteria areas look out onto these areas. So we do expect, as these buildings become more and more used, where one would imagine that staff and other visitors would perhaps like to go out there also and have their afternoon lunches. Next, please. This is the lift lobby that you have experienced yourself, where the bay of lifts are there. So there are 4 such lobbies on the 4 corners, and it provides easy access and direct connection to all the departments that have been located. I must at this point mention a small confidence. We were guided by the Honorable Minister in the nomenclature of the rooms. You will find it is very unique, and for the entire Kartavya Bhawan, the new Secretariat complex, by looking at the number, you will be able to make out where this room is located, what floor it is located at, and which wing. So, for example, if you step out, you will find Kartavya Bhawan number 3, so 3, floor 1, it is 1004. So you would know, let us say, if I am not familiar with Delhi, not familiar with the Central Secretariat, and I have a visiting card which says, okay, Joint Secretary so-and-so, 72402. So how would you know? So it's almost like a QR code or a referencing system. So you'll know building number 7, that is Kartavya Bhawan number 7, floor number 2, and it's in that particular wing, and you'll be able to go straight without having to ask anybody, search where it is. So I must fully thank the Honorable Minister. This was a brilliant intervention, and this has really worked very well. Next, please. This is a typical work hall. On the longitudinal side, these work halls are much longer, I think close to around 200 odd meters, 240. 110. Huge, long. And on the shorter side, it is much shorter, but you will notice that the furniture and the design is very, very modular. Whether it is an assistant section officer or a section officer who are sitting there, you'll find that they will be able to place their desktop right there. The whole thing is connected with network printers and scanners. So currently when you go, because that infrastructure, they're still getting used to it, so some of the legacy printers, etc., you might find on the tables, but in a very few days you'll not find them. So this is the way the next gen modern office is going to function. So staff and officers who have to function out of here have adequate table space. They have enough personal space to keep their private material, including their bags and tiffins and things like that. And if you go to the left, it's not very visible, but the picture on the left, the farthest end of that picture, you'll see a table there. That is actually a dining space. In case you don't want to go to the dining area, you could carry your tiffin box to that corner, look into the atrium, finish your lunch and come back. So with minimal displacement, minimal movement, there's a great emphasis on
efficiency. To the right, on the second picture to the right, you are seeing a glass door there. That is the door which indicates the common meeting rooms that I spoke of, where a staff or a section officer or an under secretary, if he wants to call his section and have a quick meeting, they'll be able to just move there into that space, have their meeting, finish their work, and then get back to their own workspaces. So this has been designed in this modular manner. Next, please. This is a typical conference room, where on the right side what you see is the larger conference area. And this is also another typical conference room, where it's more like a hexagon sort of a design. Next, please. This is the cafeteria, again designed in a fairly modern manner. And as I said, this is a shared common facility. We are bringing in common catering contractors so that staff, departments, officers can sign for whatever they consume and then pay for it. It gets, of course, the billing mechanisms we are working out separately. But each department does not have to create its own canteen architecture, does not have to create its own pantry architecture, does not have to create its own service architecture, which you will notice in each building. There are large numbers of these kind of service providers who are constantly moving around. Similarly, the complete maintenance of the building, including cleaning, etc., is being maintained by the CPWD, which is going to maintain all of this in the long term under the guidance of the CEO Kartavya Bhawan. I must compliment my colleague who has been leading the Amrut mission for almost 5 years now, to emphasize reduction of plastic and ensure that we have used the water in a sustainable manner. Even these are being provided in all the buildings, ensuring that we are using glass, and these are all being centrally provided. Next, please. These are the escalators I was talking about. These take us to the basement level, and from the basement we'll be able to access, we are going to perforate it and connect it to the new, as and when the construction will be ready of the concourses of the metro system. The concourse levels will get connected with this, and staff and public would be able to access this and come in a very seamless manner. Next, please. This is the building management system, where you are able to visualize how the electricity is functioning, how the AHU systems are functioning, where is condensation happening, where is efficiency gain happening, where the system is not functioning according to the efficiency standards and so on, so that we are able to control it from a central location. It is right at the first floor. Next, please. This is the security architecture. This is also connected for the entire security central secretariat system, entire Kartavya Path system. This is a section that is visible in this particular building, where we are able to see all movement of people coming in certain hallways, all the corridors, and we are therefore from one spot able to visualize where movement is happening, what kind of let us say footfall loads are taking place, and if there is a contingency, where to respond and in what manner. Next, please. This is a quick snapshot view of the public mobility corridor that we are providing. To the right, I don't have it here, I'm not able to see it clearly. The Indralok Indraprasth corridor, which is coming from the right side, is getting connected, and you'll see that loop that is coming in. The first loop is passing near the Supreme Court. We are going to support the citizens and the litigants, lawyers, etc., going to the Supreme Court. Thereafter, they are coming towards the Patiala courts. The same the corridor is moving there, going to the Delhi High Court, looping around the C hexagon, the Delhi High Court, and then following the C hexagon, this corridor is coming towards CCS 3, 1, 2, 3, which you see there. The same line is going forward, connecting with the Central Secretariat terminal, the station there, which is a very, very high footfall area. And going forward, you will notice to the left, please. The cursor should go to left, my left. That is the Yugin metro station that is under design, which is going to support the newly retrofitted projects near North Block, South Block. The same line will take us forward towards Shivaji Stadium and then connect with the other metro lines coming in.
So what we are doing in addition to this is also connecting it with the bus networks to enable smooth and seamless movement of people, so that we don't need any other private transportation. Nobody needs to use their own cars and vehicles and scooters to come. Next, please. This is in a snapshot the Kartavya Path project and the Central Secretariat Kartavya Bhawan. I now request Honorable Minister to. मित्रों, कुछ एक जानकारियां और भी इसमें जो मैं जोड़ रहा हूं, तो भी आपको जानकारी सुननी है। जैसा ये कुछ मंत्रालयों को 4 जो भवन बताए हैं जिनमें शिफ्ट करना है, जिनमें से शिफ्ट करना है, उसमें और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं। वन इज एट कस्तूरबा गांधी रोड, one is at Minto Road, one is at Jodhpur House, and another is at Netaji Nagar. ऐसे कुछ मंत्रालय टेम्परेरीली फॉर नेक्स्ट 2 years उधर भी शिफ्ट करेंगे, सो दैट ऑल द 4 बिल्डिंग्स टू बी रेनोवेटेड, उनके सब मंत्रालय वहां जा सकें। एंड दूसरा एक विषय है कि आप खुद भी कहाँ जा रहे थे? हमारा महुआ कस्तूरबा गांधी रोड के ऊपर हमने अपना कार्यालय का वो शिफ्ट भी कर लिया है एक्चुअली, क्योंकि उसका इस उद्घाटन से कोई संबंध नहीं था, वो अलग से। तो हम लोग वहां 2 साल के लिए वहां रहेंगे, फिर उसके बाद फिर जो भी रीएलोकेशन जैसा होगी उसके हिसाब से ही करेंगे। और इसी के साथ जैसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ये दोनों भी बहुत जल्दी खाली होंगे। जैसे होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब आ ही रहे हैं। और जो एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, ये भी बहुत जल्दी तैयार होगा, तो पीएम ऑफिस भी वहां चले जाएंगे। वो दोनों जो भवन हैं, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, वो एक नए स्वरूप में युगे युगे इन भारत, ये म्यूजियम के रूप में बनेंगे, जहां पिछले 5000 साल का जो भारत का एक उज्ज्वल इतिहास है, उज्ज्वल संस्कृति है, उज्ज्वल जो हमारे ऐसे चीजें हैं, उसका एक विजिटर्स के नाते से, टूरिज्म के नाते से उसको ओपन किया जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी इसमें तैयार होने वाला है। इसी प्रकार से मेट्रो का विषय आपके सामने बता ही दिया है। मैं समझता हूं कि जितने विषय बताने चाहिए थे वो सब आ गए हैं। अब एक नए युग का एक प्रारंभ यहां से हो जाएगा, और अभी क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके बाद जो कैफेटेरिया का एक सुंदर दृश्य दिखाया गया है, आप लोग सब पहले फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर जितना आपको देखना वो देखेंगे, और कैफेटेरिया में जाकर भोजन भी करेंगे। शुरू कर सकते हैं एक एक करके। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताएं। मैं कृष्ण मोहन शर्मा हूँ, भारत एक्सप्रेस से। मेरा एक सवाल है कि जब बात राष्ट्र निर्माण की हो रही है तो खर्चे की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सर हम कितना बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दफ्तर कहीं पे किराए पे हैं, कहीं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जो अलग से काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम मेंटेनेंस और कोऑर्डिनेशन के मध्य में कितना पैसा हम बचा पाएंगे? देखिए, वैसे तो जितने भी भवन पहले से हैं वो सारे गवर्नमेंट के अपने ही भवन हैं, लेकिन बहुत पुराने हो गए हैं, तो इसलिए उनका कोई किराए का विषय नहीं है। फिर भी अभी जितने भी विभाग हैं, जितने कॉर्पोरेशन हैं, जितने कमीशन हैं, जितने और हैं, उनका लगभग 1500 करोड़ रुपया रेंट वो जा रहा है। लेकिन उसमें सभी एकदम शिफ्ट होंगे ऐसा नहीं है। जैसे भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने मेरी बात हुई, तो कहने लगे हमारे ऐसे 2 अलग अलग विभाग हैं, किराए पर हैं, वो हर महीना 50 करोड़ रुपया देते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी भवन की आवश्यकता है। हमने कहा अभी तो मंत्रालय ही जाएंगे, और मंत्रालयों के बाद फिर जैसे जैसे और बिल्डिंग्स तैयार होंगी उसके बाद उनको सब शिफ्ट करेंगे। तो ये टोटल जो सिस्टम है, ये तो 2 साल के बाद ही हम बता पाएंगे कि कितने भवन यानी किराए वाले हैं वो सारे शिफ्ट किए हैं। दीपक जी, सर मेरा 2-3 सवाल है छोटे छोटे। सर आपने कहा कि सारे प्रोजेक्ट का डिटेल बताया, जो मुझे लग रहा है एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बात हुआ। तो सर ने कहा कि अवार्ड होने के 2.5 साल के बाद बन जाए, विच मीन्स बाई जून 2020, almost 6-7 months before the next election will be ready. Am I right? 27. Number 2, nothing talked about PMR, जो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस जो बनना है, क्या वो 2028 तक नहीं बनेगा? थर्ड थिंग, हम ये देख रहे हैं कि इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स द कॉस्ट एंड टाइम हैज इंक्रीज। व्हाट इज द रीजन? इज इट द बैड प्लानिंग और बैड कंस्ट्रक्शन? बिकॉज दिस गवर्नमेंट बिलीव्स इन टाइम इज। देखिए, जहां तक पीएम यानी एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का विषय है वो लगभग तैयार है। सुनिए, एग्जीक्यूटिव पहले तो मैं उसी का बता रहा हूं कि साउथ ब्लॉक से एग्जीक्यूटिव एनक्लेव यानी पीएमओ अगर शिफ्ट करेगा तो वो जो खाली होगा वो जल्दी खाली होने वाला है। उसका भी
बहुत जल्दी ही सारी जो कंप्लायंसेस पूरी करके और शिफ्ट होगा। जहां तक पीएम रेजिडेंस का विषय है उसकी प्लानिंग अभी है, स्पेस उसके लिए इरमार्क कर दिया गया है, लेकिन जैसे बाकी भवन बताया कि वो स्टार्ट होंगे, उसके बाद वो भी स्टार्ट होगा और वही लगभग टाइम जितना बाकी भवनों में लगेगा उतना ही टाइम उसमें लगने वाला है। उसमें कोई और नई जानकारी है? वो स्टार्ट हो गया है, काम शुरू हो गया बिना टेंडर का, टेंडर निकला नहीं, सेक्रेट नहीं पीएम रेजिडेंस वाला। पीएम रेजिडेंस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 2। टेंडर आया था अच्छा और इश्यू हुआ था, टेंडर के बिना कुछ नहीं हुआ। नो इट इज एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 2। उसका नाम पीएम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 2 है, नॉट पीएम देयर रेजिडेंस। इज अ रीजन, इट्स अ वेरी हाई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन। इसको बहुत चर्चा नहीं करेंगे। इट वॉज अ टेंडर्ड प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 2। एस्टिमेटेड कॉस्ट वो अभी नहीं बताएंगे। देखिए कुछ चीजें नीतिगत बातें होती हैं, अब उसमें बहुत चीजें, और जैसे बताया ना कि टाइम के हिसाब से इन चीजों में बढ़ोतरी घटोतरी भी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिजाइन्स का कोई आफ्टर इफेक्ट, कोई आफ्टर थॉट होता है, कोई बदलना है, फिर ये ऐसी चीजें नॉर्मल चीजें नहीं है कि भाई कोई कॉलेज बन गया, स्कूल बन गया, उसका क्लासरूम में एक बार स्टैंडर्ड तय हो गया। ये आवश्यकता के हिसाब से भी उसमें चेंजेस होती है। डिले का कारण डिले का कारण भी बहुत से डिजाइन, बहुत सी ऐसी फिजिबल रिपोर्ट्स वो सब होती हैं। अच्छा, अभी जैसे मानो इतने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, इसके नीचे क्या कुछ बना है 60 साल पहले के कोई भी अंडरग्राउंड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका पहले से पता ही नहीं है कि यहाँ कहाँ तो तारे हैं, कहाँ यानी किस चीज की कंस्ट्रक्शन पहले से है और नई कंस्ट्रक्शन करना कहाँ से करना था। अब जैसे मेट्रो का है, प्रारंभ में जब कभी इस चरण को सोचा गया होगा उसमें शायद मेट्रो नहीं था, लेकिन बाद में विचार आया कि ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट को कम करने के लिए हमको मेट्रो का प्लान करना चाहिए। तो मेट्रो प्लान किया तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ अदर करने पड़ते हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है कि कोई देश में हर जगह बन रहे हैं और रोज बन रहे हैं। दिस इज द यूनिक फीचर, यूनिक कंस्ट्रक्शन, यूनिक प्रोजेक्ट। तो यूनिक प्रोजेक्ट में एक आज हम बना रहे हैं तो ये सैकड़ों साल तक, यानी जब तक इसकी लाइफ है तब तक एक यूनिक मॉडल बना रहना चाहिए। ये बहुत ऐसा सामान्य बिल्डिंग नहीं है। मैं थोड़ा ऐड करूं सर, इसमें ऐसा कोई विशेष कॉस्ट ओवररन हुआ नहीं है। आने वाले टेंडर सारे हम ईपीसी भी कर रहे हैं, बट इसमें सिर्फ जीएसटी का जो चेंज आया उससे उतना ही इफेक्ट है। तो देयर इज नो मेजर कॉस्ट ओवररन। टोटल टीवी मेरे सवाल है सर, ये एक तो साइबर सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी है इस पर क्या फोकस किया गया है, क्या परिवर्तन है? दूसरा ये कि जो मंत्रालय इससे ज्यादा भवन में चल रहे थे, क्या वो पूरी तरीके से शिफ्ट होंगे? जैसे विदेश मंत्रालय की अलग भी बिल्डिंग है, तो क्या सिर्फ ऊपर वाला मेन दफ्तर को यहाँ कर रहे हैं या पूरा विदेश मंत्रालय इधर आएगा? देखिए, जहां तक संभव होगा एक मंत्रालय का निकटस्थ एरिया रहना चाहिए ताकि उनकी अपने स्टाफ की और बाकी सबकी मूवमेंट कम से कम हो। फिर भी जैसा मैंने बताया कि अभी तो चूंकि सारे भवन बने नहीं हैं, सब भवन बनने के बाद रीएलोकेशन आफ्टर 2 ईयर्स फिर दोबारा से होगी और उसमें कोशिश यही रहेगी कि एक मंत्रालय के सारे भवन निकट से निकट रहें। जैसे मानो ये भवन है, अब इसी में आईबी का भी भवन इसी में रहेगा, इसी के होम मिनिस्ट्री तो है ही रहेगी, तो ऐसे कितने भवन यहाँ रखे जा सकते हैं? अब सेना के अलग अलग भवन हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तो आफ्टर 2 ईयर्स कितने भवन, कितना एकोमोडेशन हो सकता है, कितना एक्सपेंशन इसमें होगा, ये सारी चीजें उसके बाद ही होंगी। दो चीज माननीय मंत्री जी के अनुमति से, एक क्योंकि ये केंद्रीय सचिवालय है तो जितने भी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री के जो मेन ऑफिस है वो इस पे कार्यरत रहेंगे। अटैच्ड ऑफिसेस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस है, उनके लिए जो अलग से प्रावधान हमेशा होते थे वैसे ही रहेंगे। इट्स नॉट एज इफ एक मंत्रालय के अंदर मान लीजिए 6, 7, 8 उसके अंग है, सारा एक जगह आ जाए, ऐसा होता नहीं है। सो दिस इज द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इसमें सोच विचार भी किया गया है। वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विथ ऑल अवर कॉलीग्स एंड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसमें पूरा गंभीरता से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से कहना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम अरुण भाटा है, CNN न्यूज एजेंसी से। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार का काफी फोकस रहा है, ये जितने भी भवन हैं, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड इन दैट। और सेकेंडली, आपने यू मेंशन 31 दिसंबर सम डेडलाइन। ये तीनों जो अभी CCS हैं, दे ऑल आर रेडी। अभी कुछ इसमें
लगभग तैयार हैं। उसमें बताया कि 31 दिसंबर भी नहीं, शायद उससे भी पहले हो जाएगा ये। मैं तो बाकी बिल्डिंग जो तोड़ने बनाने उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत जल्दी 2 महीने में ही हो जाएगा ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो क्या इसमें इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिकॉज वी विल बी यूटिलाइजिंग ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजीज both for people movement, people guidance, crowd management, and all the other benefits that flow out of these technologies. Nominee from India. Picnics and gathering on India Gate have been stopped for some time now. Could you please tell us what is the reason to not allow the public to congregate at India Gate, and will this be case? India Gate का? See, as I had mentioned, the C hexagon is an area which we are currently designing and trying to ensure that it becomes as people accessible and as pedestrian friendly as possible. Our own studies have shown that close to around 80,000 vehicles pass through just to go from one side to the other, and therefore clogging that area. So the office of the CEO, Kartavya Bhawan, the local police, etc., we have been trying to get a sense of understanding who comes for what purpose, what are the various activities, because eventually, once the entire esplanade is ready, our expectation is that at least on a daily basis, we expect about 1.5 lakh footfalls on this central vista area, which means the whole vista has to be designed to enable the citizens who are coming either for recreation purposes or to access the central secretariat or to go and visit the museums. And as you are aware, there are gardens under construction on both sides. So all of this area is going to become a very large public plaza. So this is basically we are assessing the footfalls, ascertaining where currently consumption is happening. So it's in a way we are checking up all of this. The whole idea is to make this entire central vista completely barrier-free, completely accessible to people, so that it really becomes a plaza of the people. These are, I think, they are all checking up various things because they have to find out who's coming from where. Somewhere they have to stop. So really, the detailing is really what they are doing at the field level. But what we have requested them to do is assess how much footfall is taking place. Otherwise, we have no idea. And as you know, currently, excepting one small area where there is enough space only for a little bit of food and beverages, where typically ice creams are sold, there is no other place where people can congregate. So we have to redesign this entire thing. This is data that is being collected in order for us to enable to redesign. So this is, but as I said, it is at the second stage. First focus was on the buildings. एक मिनट देखिए, कॉस्ट के कई इसके प्रकार हैं, सो मेनी टाइप्स। एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उसमें तो जो टेंडर होता है उसके हिसाब से चलता है, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर सर्विसेज ऑल्सो एंड डेलीगेट सर्विसेज। तो डेलीगेट सर्विसेज जो होते हैं वो अलग अलग सर्विस के हिसाब से अलग अलग समय पर जो बेस्ट सुटेबल है और जिसको बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं, उसमें बजट की चिंता नहीं करते, बल्कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। वो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड कर सकता है, उसका सारा प्रेजेंटेशन लेकर के, उसकी क्वालिटी, उसकी कंपनी की बैकग्राउंड, उसका सब कुछ देख करके बहुत सी ऐसी सर्विसेज है, उसका ही चेंज होता रहता है। वो फाइनली जब कंप्लीट हो जाएगा, ओनली देन विल कट। नहीं, टेंडर तो हमने बताया ना, दैट इज फिक्स 3,690 करोड़ रुपया, दैट इज टेंडर बनी। लेकिन इसके बाद जैसा बताया, कुछ जीएसटी का भी अंतर पड़ा है और कुछ सर्विसेज के अंदर जिस प्रकार के इक्विपमेंट्स, जिस प्रकार की सर्विस जैसी बढ़िया चाहिए, उसमें उतना ही कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन फाइनलाइजेशन, जो फाइनल होगा तब। Sir, you have talked about Central Vista Metro corridor. By when it will be completed and what is the estimated cost? See, this is at the final stages of approval, so it will be wrong on my part to talk about a particular figure, but my own hope is that within next 2 months we will have this approved entirely, because we will be moving for approval, whatever little bit of time will take place in approval.
we'll have in about 2-3 months. We should have the approvals in place. Only after that we'll have the exact amount. Right now it is at a design stage. सर मेरा एक दो सवाल है। पहला तो ये कि कब तक आप ये मान के चल रहे हैं कि जितने मंत्रालय हैं टोटली शिफ्ट हो जाएंगे, कोई डेट आपने समय निर्धारित किया? पहला। दूसरा ये कि आपने कहा कि युगे युगीन भारत को प्रदर्शित किया जाएगा एक तरह से, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। वो क्या है, किस तरह से और कब से आम जनता के लिए वो उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें बता दें। देखिए, जहां तक युगे युगीन भारत का विषय है उसके कई पोर्शंस हैं और उसमें एक एक पोर्शन को जैसे जैसे तैयार होता जाएगा अगले 2 महीने में खाली हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। खाली होने के बाद एक एक पोर्शन में काम करते समय दिसंबर 25 कुछ उसका पोर्शन खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए, बाकी अंडर रेनोवेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर डेवलपमेंट वो जो रहेगा, जैसे जैसे पोर्शन तैयार होते जाएंगे अगले साल में उसको खोलते चले जाएंगे। तो ये सारा काम इस 2 महीने के बाद उस काम को शुरू करना है। शुरू करने में जहां बड़ा मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं है, छोटा मोटा उसका काम कराना है, तो लेकिन उसका मेन स्ट्रक्चर वही रहेगा। उसके अंदर का इंटीरियर वो अकॉर्डिंग टू द नीड उसको चेंज करके उसको खोलते जाएंगे। और दूसरा क्या है, वही युगे युगीन भारत, यही बताया ना। इसके बाद उसको खोल देंगे। नॉर्थ ब्लॉक का टेंडर हम लोग अप्रूव किए फॉर रेट्रोफिटिंग का टेंडर अप्रूव कर दिया, वो जल्दी शुरू हो जाएगा उसका। क्योंकि खाली करने का जो विषय आपने बताया, चारों बिल्डिंग्स मैं समझता हूँ जैसे ये 3 बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद चारों बिल्डिंग्स से मंत्रालय इन 3 बिल्डिंग्स में, और जो एक्स्ट्रा 4 और भवनों ने बताया उसके अंदर शिफ्ट होंगे। कुछ तो शिफ्ट होने शुरू हो गए, जैसे महुआ हमने शिफ्ट करनी, शिफ्टिंग के उसमें आ गया है। कल से ये जो बाकी इस बिल्डिंग के 5 या 6 मंत्रालय मैंने बताया, कल से वो शुरू हो जाएंगे। तो ये अगले 2 महीने के बाद इन फेज्ड मैनर ये सारे शिफ्ट होंगे और जैसे बताया 31 दिसंबर से पहले इनकी डेमोलेशन वगैरह हो जाएगी। सर 2 सवाल है सर। पहला ये कि 10 सीसीएस बिल्डिंग्स जो हैं इनके बाहर जैसे वाणिज्य भवन है या जवाहरलाल नेहरू भवन है, इनके भी नाम क्या कर्तव्य भवन रखे जाएंगे या वही नाम रहेंगे? दूसरा सर, मैं वेबसाइट देख रहा हूँ सेंट्रल विस्टा का सर, सीसीएस का, इसमें लिखा हुआ ऑल दीज ऑफिसेज आर प्रपोज टू बी कनेक्टेड थ्रू अ लूप ऑफ ऑटोमेटेड अंडरग्राउंड पीपल मूवर। इसके बारे में जरा बताइए, मतलब क्या जैसे एयरपोर्ट पे वैसे कनेक्टेड हो? नहीं, वही समय में जब शुरुआत में प्रिलिमिनरी डिजाइन हुआ था किस तरह से पीपल मूवमेंट होना चाहिए, फिर हम लोग तय किए बिकॉज अल्टीमेटली ये मेट्रो सिस्टम जो है इट कैन मूव ऑलमोस्ट 25-30,000 ppHD। तो वी वेंट इन फॉर द वो वाला हम लोग किए तो थोड़ा कम होता। सो ये इवॉल्व हो रहा था। सो आप जो कह रहे हैं वो लूप एट दैट टाइम वो सोचा गया था कि लूप ऐसा रखेंगे, लेकिन अभी मेट्रो सिस्टम पे फाइनलाइज हो रहा है। और भवन का नाम सर, भवन के नाम देखिए, अभी तो चूंकि नई कंस्ट्रक्शन इन 10 भवनों का ही यानी एक प्रकार से प्रपोज्ड है, 3 बन गए, 7 आगे प्रपोज्ड हैं और ये सब कई प्रकार के सुझाव आते रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। तो बहुत से सुझाव इसमें भी आए थे, लेकिन अल्टीमेटली 1 सप्ताह पहले ये सारे 10 भवनों का नाम ये रखा भी कर्तव्य पथ के साथ ही इसको जोड़ कर रखना चाहिए कर्तव्य भवन। इसलिए ये एक अच्छा नाम सबको ध्यान में आया है। तो इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने अप्रूव कराया है, तो उसके बाद ये रखा गया। बाकी भवनों के जैसे सुझाव आएंगे वैसा देखेंगे। अभी तो कोई ऐसा बदलने की तुरंत इस समय कोई योजना प्लानिंग नहीं है। सर, जैसे गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, कैंटीन जैसे आपने बताया कि टेंडर अभी निकलेगा, उस मिलेट डाइट होगा, क्या होगा? व्हाट आर यू गोइंग टू कंसीडर? मिलेट भी होना चाहिए। आपका सुझाव अच्छा है, मेरी मन की इच्छा भी यही है। तो आपका सुझाव और मेरे मन की इच्छा अगर चलता है, लेकिन मिलेट कॉर्नर होगा, सारा ही मिलेट होगा। जो लोग मिलेट नहीं खाते हैं तो मिलेट के बिना भी खाना सबको मिल जाए। तो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ फूड्स। और कैफेटेरिया में जब आप जाएंगे तो चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो बिल्डिंग ये कर्तव्य भवन है, हम पत्रकारों यानी पीआरबी होल्डर के लिए एक्सेसिबल रहेगा या बैन? आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या इच्छा है? एक स्पेस होना चाहिए। आई.एंड.बी का जो भवन होगा उसमें तो मुझे लगता है एक स्थान जरूर होना ही चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद बाकी भवनों में क्या होगा, कितना होगा, आपका सुझाव नोट कर लिया, देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर लोगों को कैमरा में कैच मत करना सर, प्रॉब्लम हो जाएगा। रेल भवन को मंत्री पहला चुनाव
1952 में हुआ था और तब से लगातार अपने सरकार के विभिन्न विभाग, विभिन्न मंत्रालय वो अंडर एवोल्यूशन एक लगातार प्रक्रिया में से आगे बढ़े। सरकार के काम करने का जो केंद्र होता है उसका भी अपना एक महत्व होता है, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें विभागों के मंत्रालयों के भवन होते हैं। ये सब भी उसी समय क्रम शुरू हुआ था। हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट, जिसको फेडरल हाउस के नाम से जानते थे, उसी में अपनी पार्लियामेंट को बैठना शुरू हुआ और थोड़े ही मंत्रालय उस समय गठित हुए थे। उन सब का भी काम उसी के अंदर से ही चलता था। बाद में 1950 से लेकर के 1970 तक अलग अलग भवन उस समय से बनाए गए और कोई बहुत तरतीब से न बना करके जैसी जहां जगह मिली, जैसी जहां आवश्यकता थी वैसे बन गए थे। कोई एक रूपता उस समय नहीं थी, लेकिन बहुत सी दुनिया के ऐसे जो सरकार चलाने के जो स्थान होते हैं, जो सेक्रेटरीट होते हैं, वो सब बहुत सिस्टमैटिक ढंग से बने हुए हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का श्रेय देता हूं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक विजन ये लिया कि हम भी अपना जो सेंट्रल सेक्रेटरीट का एरिया है उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से, उसको एक ऐसा देश और दुनिया के लोगों को हम बता सकें, दिखा सकें कि भारत सरकार एक अच्छे स्थान से चलती है। उसी विचार से ये विषय आया कि सेंट्रल सेक्रेटरीट जो एरिया है उस सेंट्रल सेक्रेटरीट के सेक्रेटरीट को, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट को बनाया जाए और कल्पना की गई कि 10 नए भवन बनाए जाएं, नंबर 1 to 10। तो उसी प्रकार से उनके नाम रखे गए थे। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। तो कर्तव्य भवन बनने शुरू हो गए हैं। अभी 3 कर्तव्य भवन जो बन रहे हैं, उसमें से एक का उद्घाटन कल स्वयं प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, जिस भवन में हम बैठे हैं, कर्तव्य भवन क्रमांक 3। बाकी 1 और 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन कुछ काम जो बाकी हैं उसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जितनी हैं उसको पूरा करने के बाद अगले महीने में कभी भी उनका भी उद्घाटन हो सकता है। तो इन भवनों को जैसा बनाया जा रहा है, तो सब भवन जब बनेंगे उसके अंदर मुख्य रूप से 4 भवन ऐसे हैं जिनके जो मंत्रालय हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अभी 1, 2, 3 इसके अंदर करेंगे। कुछ मंत्रालय इनके अतिरिक्त बिल्डिंग्स में भी जाएंगे, जिसके अंदर शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन। इन 4 भवनों में जो मंत्रालय हैं वो सब ये 3 भवन प्लस अन्य कुछ बिल्डिंग जो पहले से तैयार हैं उसके अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि उन स्थानों पर भी जो बचे हुए कर्तव्य भवन हैं 4 से लेकर के 10 तक, उनका निर्माण शुरू कराया जा सके। तो इस नाते से आज ये इस भवन के बारे में जिसमें हम बैठे हैं, इसका कल का जो उद्घाटन होगा उसकी सूचना देने के लिए मैंने आपको बुलाया है। कल सायंकाल 6 बजे प्रधानमंत्री जी स्वयं कर्तव्य पथ पर ही एक सभा को संबोधित करेंगे उद्घाटन के बाद, और उसमें सभी सरकारी कर्मचारी तो होंगे ही, क्योंकि बहुत से भवन जो स्वयं स्थानांतरित होने वाले हैं वहां के सब लोग होंगे और कुछ पब्लिक के भी लोग होंगे। तो सायंकाल 6 बजे वो कार्यक्रम होगा। जो भवन अब नया बना है इसमें बहुत सी चीजें एक प्रकार की नई अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएंगी। बहुत से रिफॉर्म्स इसके अंदर लाए गए हैं, क्योंकि जब नए भवन बन रहे हैं तो जो कठिनाइयां पहले आती थी उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया में ये सारे भवन बने हैं, तो इसमें एक प्रकार से आने जाने का लोगों की जो सुविधा होगी, ईज ऑफ जैसे लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे ईज ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक को भी इसमें सुविधा हो, सब लोग नजदीक आ सकें और उसकी मूवमेंट जो है उसका टाइम घट सके, एफिशिएंसी ज्यादा आए। और डिजिटल इंडिया के नाते से भी जितनी आवश्यकताएं आज किसी कार्यालय को चलाने की होती है, खास करके जैसे अब पहले फिजिकल फाइल्स को इधर से उधर मूवमेंट होता था, अब ई ऑफिस बन रहे हैं। सभी ई ऑफिस का एक नेटवर्क, वो चूंकि सभी विभागों का एक सिस्टम बनता है, तो उसका एक मोर एफिशिएंट तरीके से उस डिजिटल सिस्टम को बनाया जाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा होगा और उसको मैनेज करने के लिए मोर प्रॉपरली इसको मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आज के इस डिजिटल सिस्टम को मैनेज करने के लिए विशेष तौर पर जहां तक सिक्योरिटी का विषय है, साइबर सिक्योरिटी भी अपने बहुत बड़ा विषय होता है, तो उस सिक्योरिटी के नाते से भी पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी हो
और ऐसे सब काम किए जाएंगे। कल का जो उद्घाटन, ये जो कर्तव्य भवन नंबर 3 है, इसमें जो एरिया है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर 2 बेसमेंट हैं और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड प्लस और प्लस 6 स्टोरीज, यानी ऐसे मिलाकर के सब मिलाए हम 2, 2, 4 और 6, 10, तो 10 तल हो जाते हैं। बेसमेंट पार्किंग के काम आएगी, जिसके अंदर 600 गाड़ियां, पजल पार्किंग जिसको कहते हैं, उस हिसाब से उनका स्थान होगा। और ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आगमन और उसके बाद रिसेप्शन, और बाद में कुछ विभाग अलग अलग जो रहेंगे, कुछ विभाग और कुछ स्टोरेज की व्यवस्था आदि जो आवश्यक होती है वो ग्राउंड प्लस पर भी रहेगी। फिर तल नंबर 1 से लेकर के तल नंबर 6 तक विभिन्न मंत्रालय जो आने वाले हैं वो सब आएंगे। अभी इस भवन में जो मंत्रालय आने वाले हैं, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, MSME, DOPT, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर, इनका भी अपना कार्यालय होगा। लगभग 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया इस भवन का और ये है, और जिसमें लगभग 850 कमरे सब बने हुए हैं। सब कमरों को एक विशेष रचना के अंतर्गत उनको क्रमांक दे दिए गए हैं। उस क्रमांक में आपको फ्लोर की जानकारी भी मिलेगी, उस क्रमांक में उस कमरे का नंबर भी मिलेगा, और भवन का नंबर हम अलग अलग दे ही रहे हैं। जैसे इसका भवन का नंबर है कर्तव्य भवन नंबर 3, तो एक भवन के नाम से इस कमरे का नाम नंबर बताते ही ये पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को कहाँ जाना है, कहाँ संपर्क करना है। इस प्रकार से उसकी सारी की रचना की गई है। और मैं समझता हूँ कि एक मोटी मोटी जानकारी आपको ये बताई है। एक प्रेजेंटेशन हमारे सेक्रेटरी साहब श्रीनिवासन जी करेंगे, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों की जानकारी भी है, और उसके बाद फिर आपसे प्रश्नों की जो भी कोई जानकारी आप लेना चाहेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। वो प्रेजेंटेशन उस तरफ। धन्यवाद सर। प्रेजेंटेशन पीछे है, तो आप क्या कैमरा बंद हो इस तरफ कर लेंगे या थोड़ा पीछे खाली कर देंगे? इसको कवर करेंगे, थोड़ा मुश्किल। अच्छा, तो आप इस तरह एक आमने सामने देख लेंगे। यू आर एबल टू सी, सो डू वी प्रोसीड? ये सामने से हट जाओ, बस आप इस तरफ से हट जाइए ताकि ऐसे ही वहाँ उधर से भी थोड़ा जगह कर दीजिए।